चैनल। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की क्लास के हवाले से मैं आपको आज लेक्चर देता हूँ, इंग्लिश लेक्चर 1। ठीक है, तो उसमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश लेक्चर 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंग्लिश लेक्चर 1 में सबसे पहला जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। ओके, पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इंट्रोडक्शन है तो दूसरा हमारे पास है बायोग्राफी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन वो होता है जैसे मैं सिंपली अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन में आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि माय नेम इज़ अचवर, माय फादर इज नेम इज सो एंड सो, my qualification MBA, I'm from Lahore, Pakistan, I have 5 siblings, and guys one thing please note it down, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्राई करें मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करें या फिर जो है या फिर उसको गौर से सुने, क्योंकि मैं आपको करेक्ट वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताने वाला हूँ। मैं जिस तरह से इसको प्रोनाउंसिएट करूँगा, आप भी उसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में यही आता है कि सिंपली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। ओके, जैसे मैंने कहा, माय नेम इज़ अजवद, माय क्वालिफिकेशन इज़ MBA, आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, I have 5 siblings, I love reading books, I prefer to get sweater job, and I'm hard worker. Okay, simply, that is my self-introduction. Self-introduction in few words. The next one is biography. Now, what is biography? Keep it in your mind whenever we go for interview, for any job interview. वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि बायोग्राफी करते हैं। ठीक है, बायोग्राफी क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन कम्प्लीटली, to introduce yourself completely, like what's your name? My name is Ajwad. Okay, like I will highlight this, my name is Ajwad. Okay, same, my father is so and so, my qualification is this, I'm from here, I love reading books. I will give a single every detail about myself. Okay, every single detail about me सीखा था इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बायोग्राफी के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन और बायोग्राफी में ये डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, बट बायोग्राफी में यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कम्प्लीटली from A to Z, from alpha to omega. Completely you are going to introduce yourself. Let's suppose I have written here some example. So I'm telling you, just like for example, what's your name? My name is Ashwad Sultan. And if someone asks you what's your father's name, my father's name is Mr. Sultan. If someone asks you what's your qualification, then you will say my qualification is MBA. I have done MBA. You can reply in both ways. My qualification is MBA or I have done MBA. Okay. What's your work? I mean, people usually ask. I mean, if I go outside, if someone asks me, "Oh, hey guy, hey man, what's your work or what's your profession?" Both can be asked. What's your work or what's your profession? Then your answer would be, I'm working as branch manager at bank. I'm working as branch manager at bank. Okay. Oh, how many siblings do you have? How many siblings do you have? Meaning, with you 5, or without you have, then you can simply say I have 4 siblings.
I have 4 siblings, or we are 5 siblings. You can reply in both way. Okay, I have 4 siblings. We are 5 siblings. Okay, 2 sisters and 2 brothers. 3 brothers, 2 sisters. Okay, you can. Now I'm very good, hardworking person. Now you are introducing yourself, like you're telling your biography. Usually, this biography is being used in interviews. So whenever you go any competitive examination for your interview, you must there give your biography. Means your complete biodata. Means complete biodata. They will ask your biodata. When you go, they will ask your biodata. Okay, over there you will not simply introduce yourself, but you can give complete biodata. What are your hobbies? Well, my hobbies, well, well, this is the way of bringing expressions, like exclamation. Well, my hobbies: playing guitar, swimming, and reading book. Playing guitar, swimming, and whatever are your hobbies, you can define or explain your hobbies. Okay, my passion is to achieve my goal in life. Whatever is your goal, you can say that. I'm very easygoing and friendly person. Now you're introducing yourself. You are telling something about your personality. What is your personality? So you are going to explain it, that I'm very easygoing person and friendly person. Same as it. I love now your likes and dislike. I love gym. I love doing gym. I love gym, or I love doing gym. Okay. I like honest person, and I dislike dishonest person. Okay, I like honest person. At the same time, you are also telling your dislike. What do you dislike? I dislike dishonest person. Okay, so no, next, what you are. So this is called your biography. Means you are introducing yourself from start to end, from alpha to omega. You are completely introducing yourself. That is called your biography. That goes in your biography. So, meaning to say that you are giving your complete biodata. Okay, so guys, this was our first lecture. So again, in our next class we are going to come with some next topics, and it will be our complete 30 days class. So in 30 days class I'm going to polish up your language, and you will be able to speak very fluent English. So अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरे आने वाली वीडियोस जो इस लेक्चर से रिलेटेड हों वो आप तक पहुँचे, और आप जो है उनसे कुछ न कुछ सीखें। आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें। और अगर आपको कुछ मज़ीद चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है ना भूलिएगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं उस रिलेटेड आपसे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।